Didn't know he would have to pad up so early. Next to him, Usman Salahuddin, 80 in the first innings. Yeah, this is good cricket. Just hitting and running. Because changing of strike is going to be very important in this first session especially. It's a long session of 3 hours. You need to bat it out. Central Punjab need to take maximum time to, in this day especially. They need to at least play till this session at least. Just to make a game out of it, because at the moment it's even Stevens in my opinion. Just that last over, last day. Shahnawaz Dhwani has bowled well. He's been unlucky though. 3 catches have been dropped on his bowling. Very tall, fast bowler. Nice smooth run up and a good action too. So probably he can extract that bounce, that patch I was talking about in the pitch report. There is this patch. If you are able to extract that patch, like Waqas Maqsood did for Central Punjab, you're in for wickets. But you have to bowl at the right areas, that channel. Exactly ahead. Just make the batsman play. Just don't make them leave the balls. Because you're only going to get the wickets if you're going to target the stumps. That's where batsmen are going to get those edges, the BWs and bowls. Because if you bowl way outside the outs off stump, they're happily leaving it. Because that's what they're going to do. They're going to take time. They're going to waste as much time as possible. If you look at the batting lineup of Sindh, it's 98 for 5. We're talking about the batting lineup of Sindh. They're heavily relying on the top 4. That's Asad Shafiq, Umar Yusuf, Saud Shakil, Shajil Khan, Saad Ali. I think these are the 5 batsmen that we definitely look on. There's nothing much, no all-round cricketers. It's all tail-enders, starting from Mir Hamza, Tabish Khan. Shazar is one, but he has not impressed us much. Mir Hamza, Tabish Khan, Ibrahim Ahmed, Shahnawaz Dhwani, Mohammad Umar, they're all specialist bowlers. No all-rounder included in that. That will definitely be in the minds of Central Punjab. They missed out on a bowler. In fact, 2 bowlers in the previous game. They've left out Hassan Mohsin. That's where the all-rounder comes in. And they've opted for a bowler. Umar comes in. Umar has been impressive. You're talking about bowling that outside the off-stump channel. This is the pair who can afford to do that. Test them outside the off-stump. But once any wicket falls from here, it becomes 6 down. Then you got the tail-enders. You got to bowl in the stumps because they have this knack of trying to prove themselves that they are batsmen. They will go after you. They'll try to touch everything. That comes out of habit. And then you get opportunities to bowl them out. We see around the world, it's a good ball, that bowlers who are good at cleaning up the tail bowl into the stumps. Your brother was good at that. Bowled right into the stumps. And that's why he got so many wickets, LBWs, and bowled. Because he always looked to bowl to those stumps. Ball reversing, it gets nearly impossible for a batsman to play. But this is different. 100 up for Central Punjab, and they now lead by 284. This partnership going on. Mir Hamza. Cut between the gap. Fielder is behind, but he might not be able to. We'll have to wait and see. They should be able to get 3 out of this. Yes, easily taken 3 runs. So runs now coming. They've now moved to 103 for 5. Saad is generally so good when he plays at the back foot. And this was exactly where he likes. He's a good back foot player, Saad Naseem. Very experienced though. Has not done
as expected in this tournament so far. Beautifully done by Shan. Fuller delivery and just went through with the line. Beautifully played. Fabulous. Just timed it. This is why Ali Shan looks so good when he's playing. When he's going, he has the potential of hitting big hits. He's known for that. And if he can get going here, things will change for Central Punjab. That nipped in, came back. That surprised Ali Shan also, and everyone here also. Good comeback by the bowler. Cut him into half. Pitches and just gets right into the body. That's the pass we talk about. That's where Waqas Maqsood got his most wickets yesterday. Other than that, I think that's a perfectly fine pitch. But this patch where Mir Hamza just bowled, I think that is the patch where he should look to bowl more deliveries. Seven for 5. That's bowling card for Sindh. Mir Hamza 10 overs 30 runs without a wicket. Shahnawaz Dania I think has been the pick of the bowlers. He's bowled beautifully for 32 runs, got 1 wicket. Tabish Khan, the experienced Tabish Khan, 6 overs 28, no wicket for him. Ahmed Umar, he bowled beautifully yesterday, 6 overs 15 and 2 wickets. And the surprise package of Abrar only bowled 1 over, 1 run and got 2 crucial wickets at the end of the day yesterday. That was the over that changed everything for Central Punjab. You're talking about Saad Naseem a while ago. Saying how important he is to the side. He's been given responsibilities as well in this domestic season. He was leading Central Punjab in the National T20 in the absence of Babar Azam. And when Babar Azam came, he didn't find a place in the 11 at all. Then he was named vice captain of the 4-day cricket in Central Punjab. And Central Punjab has been changing their captains, and now he's not the vice captain anymore. Well, I feel for him. I mean, it's just very strange. Such a Pakistani thing that is. One day you're the captain, the next day you're out of the team. It has happened to so many of the captains. It's so unfortunate. Some tips from Basit Ali to Mir Hamza. Wonder what he would be talking. So probably to bowl at the right areas, towards the leg stump, towards the body. Because the tension is there on his face. You can easily tell because runs are coming. The lead is now 291. Problems are there for Sindh. Sikandar, if I ask you, what score would Sindh be looking to chase? At what score would they be comfortable at chasing? As less as possible. Any number if I can talk about? You were so particular about my numbers yesterday. No, I wasn't. You were. I was just listening. Well, I don't know. This is so much time left. I mean, if they can bowl them out in the next 1 hour. Even if you say they have a lead of 350, I'll fancy my chances with, I wouldn't say 5 sessions, 4 sessions, because Friday has 2 sessions only. But in terms of time, you still have the same 3.5 hour session post lunch and 3 hour session before lunch. But when you're chasing something down like 350, then you're not thinking of time.
If it's available to be chased earlier on, you will do it. It's Central Punjab who's playing with time and score. You know, we've been talking about Waqas Maqsood, 6 for 25. What if they tackle Waqas Maqsood? What about the other bowlers in Central Punjab? How good have they been? And how supportive can they be to Waqas in the second time around when they come to bowl? There's Hassan Ali. There is Bilawal Iqbal. I think Bilawal Iqbal has bowled well. He's been steady. He's been right there with the line and length. I think, in my opinion, it's going to be Bilawal Iqbal, if not Hassan Ali or Waqas Maqsood. Because this pitch will suit his sort of bowling, because he's one who can get that line and length right. That's a maiden for Shahnawaz Dhani. 107 for 5. You're talking about Sindh chasing in the last inning. They do have players, such impact players, as you mentioned. Somebody like Shajil Khan, if he gets going, they probably will get it done before the second session yesterday, tomorrow also. And there is Asad Shafiq, very experienced. Umar bin Yusuf, he's been in tremendous touch. Saud Shakil, the fourth inning specialist. Potential is there. So if they can get them out before 350, Sindh will definitely fancy their chances. But then again, I still believe they are one batsman short somehow. They're playing with Shazam Mohammad as an all-round cricketer, but I'm very surprised at his selection. He has scored 92 runs in second 11 in his 6 innings. He's been promoted to the first 11. A rather strange decision, in my opinion. That's done. Basically told him, bowl that length, and he's done exactly that. First blood drawn on day 3, and Mir Hamza gets another wicket. It's 6 down now, and they've got the wicket of their keeper Shan. Very good length that he had to tackle with. Have a look at that. Tucked in the crease, trying to move the bat away, and Sheza does the rest. So, getting a wicket in the first half an hour of the day's play. Ali Shan goes off, scoring 6, and it's 107 for 6. Yeah, the same patch, the same position, the same where Waqas Maqsood got a lot of wickets yesterday. That's exactly how I think probably Mir Hamza has learned a lot from Waqas Maqsood, bowling at the right channel. It gets so difficult for the batsman whether to play on the front foot, go to the back foot. Just that middle teasing length we talk about. Big wicket for Sindh, a very crucial wicket. Ahmed Safi, the left arm spinner, or is it? The captain himself, Hassan Ali, now coming to bat. He would fancy getting some quick runs. He can use his long handle. 693 runs for him at the average of 16.1 to 250s to his name. Best of 59. If he gets going for half an hour or 1 hour, things will get very interesting
for Central Punjab, because if he stays on, he gets runs quickly. He's never shy of hitting big. That's how the wicket fell. Perfect line and length for Mir Hamza. Just bat hung onto it. Two slips and a gully. Fielder at cover and deep square leg also in place. Deep fine leg for Hassan Ali, which probably Sindh also understands that he is in. He will get some quick runs. It's just amazing how a player can absorb what his coach is telling him. Just in the previous over, when Mir Hamza was down at the boundary line at fine leg. It's a brilliant ball. Basit Ali came to him and spoke to him, talking to him about a certain length that he needs to bowl to either of these batsmen. And he's done exactly that. So quick to absorb what the head coach has noticed sitting at the boundary line. And then he bowls a brilliant delivery. And that just leaves the batsman nowhere. That was the previous ball to Hassan Ali. It's just amazing to see how the support staff works in tandem with the live game that's happening. When you notice a thing or two which maybe the on-field players or the captain hasn't really noticed, and then you point it out as a coach. End of the over. It's 108 for 6. Yeah, that's the benefit of having somebody like Basit Ali, these experienced coaches, along with these youngsters, very keen observers. That's the batting card for Central Punjab so far. Saad Naseem is not out on 19. Hassan Ali has just joined in without scoring. Ali Shan losing his wicket this morning to Mir Hamza. He was caught by Shazer, scored 6 runs. And the only batsman getting some runs was Mohammad Ikhlaq yesterday, got 56 runs. Got out on a crucial time yesterday. That's Basit Ali, which Sikandar was mentioning. Very keen observer of the game. Got his eyes on everyone in this ground, even the commentators. दो 92 रन की बढ़तरी हासिल है इस वक्त सेंट्रल पंजाब को। हसन अली पहली इनिंग्स में 26 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, लेकिन 2 बैट्समैन इनकी मौजूदगी में रन आउट हुए। यकीनी तौर पर अपने पार्टनर का भी रनिंग में ख्याल रखना होगा हसन अली को। सिंध के बॉलर्स ने अच्छा आगाज़ किया है, दोनों तरफ से अग्रेशन देखने को मिल रहा है। शाहनवाज धानी और हसन अली के दरमियान इस वक्त कुछ गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि कराची में मौसम आज बहुत खुशगवार है, लेकिन मैदान में दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैच बहुत दिलचस्प है। महमूद
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिल्कुल तारिक, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और क्लियर सनशाइन, मॉर्निंग सेशन और थोड़ी सी गर्मा गर्मी। हसन अली और शाहनवाज, एग्रेशन फास्ट बॉलर में तो डेफिनेटली होता ही है तारिक, और ये चीज़ ना हो, ओवर लिमिट ना हो, थोड़ा सा आप एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। सो हसन अली को शायद बहुत बुरा लगा। 2 स्लिप, 1 गली, पॉइंट कवर, मिड ऑफ। शाहनवाज रानी बॉलिंग करते हुए 1 खिलाड़ी आउट किया है। 6 आउट हो चुके हैं। सेंट्रल पंजाब के 292 रन की लीड हो चुकी है और 56 रन बनाए थे इखलाक ने, और इसके अलावा कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं हुई। नसीम जो हैं वो, साद नसीम 19 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, एक सीनियर बैट्समैन। सर काफ़ी ऊपर था, जाने दिया उसको हसन अली ने, एम्पायर का इशारा, 1 ऑफ द ओवर। कासिम आई थिंक फर्स्ट इनिंग में भी शायद वो 0 पे आउट हुए थे, और सेकंड इनिंग में भी माइट भी। आप बिल्कुल पेयर लिया, सही कह रहे हैं, पेयर लिया है उन्होंने इस मैच में, और यहाँ जो नसीम और हसन का पेयर है, इनको रन्स बनाना होंगे। इस बार फ्रंट फुट पर आए, बड़े एतमाद से खेला हसन ने, हालांकि स्क्वायर लेग पर फील्डिंग थी बाउंसर के लिए। देखिए अब ये ज़्यादा खुशगवार तबादला ख्याल है। तारिक, मुझे बहुत अच्छा लगा है, गुड जेस्चर हसन अली की जानिब से, क्योंकि हसन अली जो है सीनियर क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई, वो शाहनवाज दानी अभी पहला सीज़न खेलने आए हैं फर्स्ट क्लास का, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है सीनियर्स की जानिब से कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको उन्होंने जाके उसको क्लियर किया, तो इससे जूनियर का जो है वो उसको मोटिवेशन मिलती है और उसका दिल बड़ा होता है। तो बहुत अच्छा जेस्चर हसन अली की जानिब से। मीर हमजा अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस मैच में, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं। यहाँ सिंध की टीम जो है वो इस मैच से अभी बाहर नहीं हुई, क्योंकि ये बैटिंग कोलैप्स हुआ है सेंट्रल पंजाब का। 61 रन पर 1 खिलाड़ी आउट था एक मौके पर कल शाम, और उसके बाद हमने यही देखा है कि अगले 48 रन में इनकी 5 विकेटें गिरी। कल सिंध ने अपनी आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 50 रन के इजाफे में गंवाई थी। बॉलर्स ने यहाँ पर सिंध को इस मैच में रखा है, अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने दूसरी इनिंग्स में, फील्डर्स ने कैचेस भी पकड़े हैं। 36 बाउंसर और मीर हमजा अच्छी बॉलिंग करते हुए। अगर आप ओवरऑल देखें इस मैच को, अगर एनालाइज हम करते हैं तो यहाँ पर एकदम जो है विकेटें गिरनी शुरू हुई हैं। अगर आप पहले दिन देखें कि एक पार्टनरशिप लगी, इनिशियली अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद विकेटें उनकी सेंट्रल पंजाब की भी गिरी, और कल फिर आप देखें सुबह आते ही उनकी विकेट गिरी, फिर सिंध की टीम आउट हुई, और फिर एक पार्टनरशिप लगी सेंट्रल पंजाब की, फिर एकदम उनकी विकेटें गिरी। तो इस पिच के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बॉल, ये बहुत ही अच्छी लेंथ पे गिरा हुआ बॉल था, ड्राइव करने गए थे साद नसीम, एंगल से गेंद जो है वो तारिक बाहर जा रहा है, और अच्छी लाइन है मीर हमजा की, टीजिंग लाइन जिसे कहना चाहिए बैट्समैन को। ये देखें, लेकिन बहुत दूर से खेल गए थे साद नसीम, बॉडी उनकी जो है बहुत दूर थी बॉल से। तो ये सारी सिनेरियोज हैं। इनिशियली आप जो हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेटल होना पड़ता है, उसके बाद आपके शॉट्स लगते हैं यहाँ पर, लेकिन अब तक ओवरऑल बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क रही है। वकास मकसूद कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, हसन अली
जो हैं ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। इनने कई बार दिखाया भी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट मैचों में, वनडे मैचों में 20 रन 25 रन बहुत कारआमद इनने बनाए हैं। तो अगर ये पूरी तरह फिट हो जाते हैं और ज़रा सा अपनी बैटिंग को संजीदगी से लेते हैं नेट में भी, तो ये ऐसे आसार हैं कि इनमें आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर नज़र आ सकता है। लोअर ऑर्डर में ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं इन दिनों। जैसा कि फ़हीम अशरफ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बैटिंग टैलेंट है हसन में, खासतौर पर स्ट्रोक खेलने का। शॉर्ट गेंद थी, इसे हुक नहीं कर सके। साद वसीम 110 पर 6। शायद एक गेंद बाकी है अभी भी मीर हमजा की। तो बात हो रही थी कि सिंध की टीम जो है अभी इस मैच से बाहर नहीं हुई। उसकी वजह एक ये भी है कि ये तीसरे और चौथे दिन ये नेशनल स्टेडियम की जो पिच है इस पर बैटिंग होती है, अनप्लेबल नहीं रहती। ख़ास तौर पर जो इस सीज़न का रिकॉर्ड है अगर देखा जाए तो तीसरा और चौथा दिन बैटिंग के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहा है। 37वां ओवर इख्तिताम को पहुंचा 110 पर 6। दो खिलाड़ियों को उमर और अबरार ने आउट किया कि एक शाहनवाज और एक हमजा ने आउट किया हुआ है। और इस सीज़न के अंदर तारिक अब तक जो सेकंड बैटिंग जिन्होंने की है अब तक मैच हारी नहीं है, लेकिन ये मैच एक डिफरेंट है। आज जैसे आप पिच की बात कर रहे थे तो पिछले मैच में हमने देखा कि बड़ा अच्छा हो गया था, पिच बेहतर हो गया था, लेकिन ये पिच थोड़ा सा डिफरेंट खेल रहा है, हार्ड हो रहा है ये पिच। इस पे बॉल जा रहा है जिसमें शॉट्स भी लगेंगी, लेकिन बॉलर को भी यहाँ पर एडवांटेज है कि अपनी लाइन और इनको मेंटेन करता है, तो वहाँ पर मुश्किल कर सकता है वो बैट्समैन को, जो अभी तक हमने देखा। और आप हसन अली की बात कर रहे थे, बिल्कुल प्लेयर को अपना खुद भी पता होता है। बेसिकली ऑलराउंडर वो ही प्लेयर बन जाता है जिसकी बेसिक अच्छी हो। थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें, नेट्स के ऊपर जाएं, तो ये डेफिनेटली जो 20-25 रन कर सकता है तारिक, इट मीन्स कि उसमें कैपेबिलिटी है कि वो रन्स कर सकता है। तो सिर्फ कंसंट्रेशन और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ, तो ये कर सकते हैं। क्योंकि इस स्पेल में भी हमने देखा है हसन अली पर बाउंसर अटैम्प्ट किए शाहनवाज धानी ने, लेकिन फिर भी जो आगे गिरी हुई गेंद है उसको फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, ज़्यादा घबराते नहीं है, बैक अवे नहीं करते फास्ट बॉलर पर। और अहम बात यह कि जब ये हिट लगाते हैं हवा में भी तो कोशिश करते हैं लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ हिट लगाने की, यही बैटिंग में इनकी कामयाबी का भी राज है। लेकिन जैसे पहले इनिंग में इन्होंने आके चांस लिया था बड़ी हिट लगाने का, लेकिन आज उस तरह वो बैटिंग नहीं कर रहे, सेंसिबल तरीके से खेल रहे हैं। कोशिश है कि जितनी मैक्सिमम लीड ले सकें वो लें। इस दफ़ा ड्राइव करने के गए थे ऑन दी अप, स्टंप के बाहर गिरा था बॉल धानी का, और पड़ने के बाद हल्का सा बाहर गया। तो देखें थोड़ी लेंथ पीछे थी, ऑन दी अप गए थे खेलने के लिए। 2 स्लिप एक गली के साथ धानी बॉलिंग करते हुए। और धानी जो हैं ये फास्ट बॉलर, इनकी आउटलुक भी है, लंबे लंबे हाथ हैं, बड़ी उंगलियां हैं। फास्ट बॉलर आमतौर पर ये बड़े बड़े फास्ट बॉलर गुजरे हैं। फजल साहब फास्ट बॉलर की पहली निशानी यही गिनवाते थे कि हाथ बड़े होने चाहिए फास्ट बॉलर के, कद के अलावा आपकी उंगलियां जो बड़ी होनी चाहिए, पकड़ आसान हो जाती है क्रिकेट बॉल की। धानी उनकी कदो कामत जो है मुनासिब है,
रफ्तार पहले ही अच्छी देखने में मिल रही है, अच्छे एथलीट लगते हैं, अच्छी अप्रोच है क्रीज तक पहुंचने की। और ये वो गेंदें हैं जो इस्तेमाल हो चुकी हैं और जिनसे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं सुबह के वक्त। पुश किया, अच्छा पुश, सीधा पॉइंट के फील्डर के पास। 294 रन की लीड हो चुकी है। हसन अली कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करते हुए। अब देखें 18 बॉलें खेली हैं, 1 रन बनाया हसन अली, तो इससे उनकी कंसंट्रेशन लेवल आप देख सकते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं करे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, तो मैक्सिमम जितनी लीड सेंट्रल पंजाब ले तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शाह बॉल हैंग हो गए थे इस दफ़ा, ड्राइव करने गए, पुश करने गए, बीट हुए। दानी का एक मेडन ओवर, 110 पे 6। मीर हमजा को अब हटा लिया गया और उनकी जगह पर गेंद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है मोहम्मद उमर को, जिन्होंने कल अच्छा स्पेल किया था। 3 मेडन रहे उनके 6 में से, 3 ओवर से और 15 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। ये भी फिट होकर वापस आए हैं। कल इन्होंने मोहम्मद साद को LBW आउट किया और लगातार 2 विकेटें हासिल की थी। वहीं से सिंध की टीम को इस मैच में वापस आने का मौका मिला। राशिद अली बहुत मुतहर्रिक कोच हैं सिंध की टीम के, पाकिस्तान के फॉर्मर बैट्समैन, और अपने खिलाड़ियों से ज़्यादा दूर नहीं रहते। अभी हमने देखा था कि वो आए थे मीर हमजा से बात करने के लिए और फिर फौरन ही उनने विकेट हासिल कर ली थी मीर हमजा ने। ये उमर ने जो 2 खिलाड़ी को आउट किया था, अच्छी बॉलिंग की थी उमर ने, उसी एक ही ओवर के अंदर 2 खिलाड़ी को आउट कर लिया था। पहली इनिंग्स में ज़्यादातर इन्होंने आउट स्विंग बॉलिंग की मोहम्मद उमर ने, इस इनिंग्स में ज़्यादा इन स्विंग करते हुए नज़र आए हैं। कल हमने देखा ज़्यादातर जो बॉलर्स से वही कामयाब रहे जिन्होंने स्टंप्स को अटैक किया। उमर उन्हीं में से एक थे। हमारा जो कमेंट्री बॉक्स है ये नेशनल स्टेडियम के मीडिया सेंटर में वाक़ई 3री मंजिल पर। फिर इन स्विंगिंग यॉर्कर, इसे टाल लिया। हसन अली का आप जिक्र कर रहे थे कि 22 गेंदों में इन्होंने 1 रन बनाया है। पहली इनिंग्स से इसलिए मुख्तलिफ लग रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। पहली इनिंग्स में इन्होंने टेल के साथ ज़्यादा वक्त इनका बीता था पिच पे, इसलिए कोशिश कर रहे हैं एक एंड को ब्लॉक किया जाए। दूसरे एंड पर साद नसीम रन्स बनाते रहेंगे। इस बार हसन अली ने स्ट्रोक खेला, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी विड्थ मिल गई थी और गेंद जो है बाउंड्री लाइन पार नहीं कर सकी। 3 रन हासिल किया हसन अली ने। आज पहली मर्तबा उन्होंने ज़ोर से शॉट खेलने की कोशिश की। स्लाइड करके बॉल को रोका और देखना होगा कि सेव
अच्छी फील्डिंग, 1 रन बचाया। उमर यूसुफ थे फील्डर। इसको डबल टीम प्ले कहते हैं। उमर यूसुफ जो हैं ये मदद को पहुंचे थे। सऊद शकील ने गेंद को रोका, उमर यूसुफ की तरफ गेंद को धकेला, जिन्होंने थ्रो फेंकी। अच्छा ओवर था मोहम्मद उमर का, 114 पर 6, 39 के बाद। अबरार अहमद जो हैं वो कुछ देर के लिए मैदान से बाहर जा रहे हैं। कल इनके हाथ पे चोट लगी थी, आज अभी तक उनसे बॉलिंग भी नहीं कराई गई। ऑफ स्पिनर से कल देर से आए थे, लेकिन 2 विकेटें एक ही ओवर में हासिल की अबरार ने। और यहाँ पर धानी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और हवा में खेला, गेंद सीधी गई फील्डर के हाथ में। मिड ऑफ पोजीशन पर मीर हमजा ने कोई गलती नहीं की और हसन अली जो अब आहनी हाथ दिखाना चाह रहे थे, ज़्यादा देर विकेट पर नहीं ठहर सके अपने इस अंदाज के साथ और आउट हो गए। इस दफ़ा सबर का दामन छोड़ा था हसन अली ने, बड़ी हिट लगाने गए थे सीधा मीर हमजा के पास मिड ऑफ पे, तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा। हसन अली 4 रन बनाने के बाद आउट हुए 114 पे 7। इकबाल आ गए हैं, इनमें भी बैटिंग करने की सलाहियत है और अभी तक जो बढ़तरी है 298 रन की सेंट्रल पंजाब की। कल से आज तक 18 रन का इजाफा हुआ है। सिंध के लिए ये अच्छी सुबह रही है, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। देखिए हसन अली से इनका जो फर्स्ट क्लास बैटिंग रिकॉर्ड है वो बेहतर है, लेकिन कप्तान खुद आए इनसे पहले खेलने के लिए। डिलीवरी थी, बैक फुट पर खेला, इससे गली की जानिब। सनोली आउट होने का मंजर, निकल के खेले थे लेकिन पीछे किया था बॉल और उनकी बॉडी की तरफ आया, इसलिए उनको विड्थ नहीं मिल सकी, एक्सटेंड नहीं कर सके अपने हाथों को, तो इसलिए सीधा गेंद लेकिन मिड ऑफ की तरफ गया। वहाँ मीर हमजा मौजूद थे, आसान एक कैच, तो हसन अली आउट हुए। साथ नसीम सीनियर बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं। तो मिडिल लेग पे गिरा हुआ बॉल था, बहुत अच्छा उसको खेला है मिड विकेट की तरफ, आसानी के साथ 3 रन बना लेंगे बॉल और अपना 3 रनों के साथ अकाउंट भी खोला। 300 रन की यहाँ पर लीड हो गई है सेंट्रल पंजाब की। पहली इनिंग का डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, अदरवाइज सेकंड इनिंग में ये भी कोलैप्स हुए हैं। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
और अजीमुद्दीन हमें बता रहे हैं, हमारे स्टैटिस्टिशियन, कि पिछले 4 बरस में, पिछले 5 बरस में 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि चौथी इनिंग्स में 300 से ज़्यादा रन बनाकर टीमें जीती हैं। कैच किया, विकेट कीपर ने बड़ा शानदार कैच लिया। शेजर मोहम्मद ने स्लिप के सामने डाइव की और इस तरह एक और विकेट हासिल की। शाहनवाज धानी ने, उनका बड़ा उम्दा स्पेल, आउट स्विंग होती हुई गेंद, और नसीम एतमाद के साथ नहीं खेल सके। इस तरह आज तीसरी विकेट गिर गई सेंट्रल पंजाब की। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद किया था, चल के आए थे, चेस कर गए बॉल को और शेजर ने अपने दाएं जानिब डाइव करते हुए अच्छा कैच किया। तो शाहनवाज दानी की एक और विकेट इसी ओवर के अंदर। साथ नसीम आउट होकर पवेलियन में वापस 21 रन बनाए, 117 पे 8। सेंट्रल पंजाब की बैटिंग मिसमार हो गई है। आज उनकी 3 विकेटें गिरी हैं सिर्फ 21 रन के इजाफे में। इसलिए अहमद सफ़ी अब्दुल्ला को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए, जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। धानी ने बहुत ही उम्दा स्पेल किया है आज और अपनी टीम को अपने खेल से दूर नहीं होने दिया। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला 430 रन बना चुके हैं, 11 उनके औसत है। बैटिंग कर सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में। फैसलाबाद से ताल्लुक़ है सफ़ी अब्दुल्ला का। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है शाहनवाज धानी ने। बड़ा था ये बॉल और ये आउट होने का मंजर। साद नसीम जिस तरह ये खेले, थोड़ा सा चल के, जहाँ पर सीम हो रहा हो, स्विंग हो रहा हो, वहाँ पर गेंद का वेट करते हैं रादर के गेंद की तरफ जाना वो ज़्यादा डेंजरस होता है। और तो यही गलती साद नसीम ने की है और बैट को खोला और चेस कर गए बॉल को। काफ़ी बाहर था बॉल, चेस कर गए, एज हुआ। बड़ा अच्छा कैच किया शेजर मोहम्मद ने दाएं जानिब डाइव करके। देर तक अपील करते रहे लेकिन मुतासिर नहीं कर सके। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को, और वहीं पर शक था अंपायर को, शायद गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरी हो। 117 पर 8। एक मौके पर 61 के स्कोर पर सेंट्रल पंजाब की 1 विकेट गिरी थी और मोहम्मद अखलाक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और मोहम्मद अखलाक ने मिस सेंचुरी बनाई। कल के बाद से वो एक ऐसे बैट्समैन लगे हैं जिन्होंने जो रन्स बना सके हैं, और आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम देख रहे हैं। आज ओस भी ज़्यादा गिरी हुई थी या मैदान पर, कराची की सड़कों पे भी ओस थी। सुबह ऐसा लगता था शायद जैसे रात को बारिश हुई हो, हालांकि ऐसा नहीं था। ये देखें LBW जो अपील हुई थी और ऐसा नहीं लग रहा कि गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ हो, मिडिल पे पिच हुआ। बहुत अच्छी अपील जिसे कहना चाहिए, लेकिन एम्पायर ने
इसको रद्द किया। ड्राइव करना चाहते थे, रन्स मिलेंगे बिलावल इकबाल को। और इस बार उमैर पहले चले गए, सऊद ने गेंद थ्रो की। इससे कबल हमने सूरत हाल बिल्कुल बरक्स देखी थी। 3 रन्स हासिल कर सके बैट्समैन, हर रन बहुत कीमती है। अभी भी सिंध की जानिब से कोशिशें जारी हैं। ये देखिए अच्छी फील्डिंग उमैर बिन यूसुफ की, गेंद से वो छुटकारा पा चुके हैं जब तक उनका पाँव कांटेक्ट में आए रोप के। सिंध की बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही है। आप जैसे ओस की काफ़ी बात कर रहे थे, काफ़ी वाकई गीला था ग्राउंड, और लेकिन सुबह अच्छी एक जिसे कहना चाहिए धूप लगी। और ग्राउंडमैन्स का भी इसमें कमाल होता है कि बड़ी जल्दी इसको सुखा देना ग्राउंड को, वरना अगर बॉल अगर गीला हो जाए तो फिर वो सीम स्विंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बड़ी हिट लगाने गए अहमद सफ़ी, डॉफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, बीट हुए और अपील बड़ी ज़बरदस्त थी वो लेग बिफोर की तारिक, और मिडिल में ही गिरा था बॉल। और देखना ये होगा, सिर्फ एक ये था कि हाइट शायद मैटर कर सकता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से इन फ्रंट थे। मिड ऑफ को क्लियर कर जाएंगे, यहाँ पर 2 रन्स मिलने चाहिए अहमद सफ़ी अब्दुल्ला को। आबिश खान गेंद के पीछे गए। सो कोशिश यही है, दोनों बैट्समैन जो हैं हर गेंद पर हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रन्स बने। शायद वो जानते हैं कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और अपने डिफेंस पर इतना एतमाद नहीं है दोनों को। देखें एलबीडब्ल्यू जो अपील हुई थी, बिल्कुल नी रोल के ऊपर बॉल लगा है। मेरे ख्याल से हाइट भी नहीं ऐसी थी, लेकिन बहुत इन फ्रंट थे। अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। आगे गिरी हुई गेंद और इस मरतबा शानदार शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आकर गिरी। पहला छक्का आज के दिन का, इस इनिंग्स का भी पहला छक्का जो सफ़ी अब्दुल्ला ने लगाया। और थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑफ द किया इस दफ़ा अहमद सफ़ी ने, उनको नज़र आया बॉल और बॉलर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। तो अब क्योंकि 8 आउट हो चुके हैं, मैक्सिमम रन्स की लीड लेना चाहती है सेंट्रल पंजाब की टीम, क्योंकि सिंध के टीम में ऐसे बैट्समैन हैं, इतने कैपेबल बैट्समैन हैं। तो फिर एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश, बीट हुए, रन्स कर सकते हैं सिंध के प्लेयर, ऐसे कैपेबिलिटी है जो मैं कह रहा था। तो ओवर का खत्म 128 पे 8।
We are back after the drinks break. Central Punjab are 128 for 8. 3 wickets falling in the day's play. Ali Shan was the first batsman who went back into the pavilion. Mir Hamza, brilliant out, showing that he could not keep the batsman out of the line. And then Hassan showing some aggression, played straight into the hands of mid-off. The last batsman out is Saad Naseem. He was way outside the off-stump, still he could not get out of the line. Second wicket for Shahnawaz Ali Dhani. And what a game we are having this Friday morning in a national stadium so far. When we talk about a 4-day cricket game, it is all about coming back, the ups and lows, the ebb and flow of the game. And this is all we are having, Ali, this morning here in Karachi. Absolutely an exciting game in our hands. Central Punjab leading by 312 runs at the moment. They would just love to get past that 350 run mark if they can do it. Ahmed Safi and Bilawal Iqbal they both have the potential to get those runs, but the situation is different. Shahnawaz Dhani is bowling brilliantly. He's taken 2 wickets this morning, 2 important wickets. Once again trying to flash it hard. When we talk about the total lead, it is of 312 runs. It is always difficult to chase down any score of even more than 250, but there will be a lot of time left still in the game. This is only the 3rd day, the first session, which is, remember, going to be an elongated one, but still it is going to be 2 more hours of this session, then 3 hours coming into the act, then 1 full day tomorrow. So they will have a definite chance to chase down such kind of a total, which is around 350 or thereabouts. Another pitch of a delivery. Shahnawaz Ali Dhani is really the find of this Quaid Azam trophy. Surprised Bilawal Iqbal by that kind of a sharp bounce. The patch which you have been talking about, Ali, this time it got the better of Bilawal Iqbal. Yeah, just kicked on. That delivery, that teasing length we talk about. We've been talking about since yesterday. Bowlers need to exploit that. And today morning, I believe Sindh has done well. They've extracted that patch, and Bilawal Iqbal, he looks in pain. Definitely, why not? Because that hit his thumb. And hopefully, it's not his bowling arm. Yeah, that's his left hand. This can hurt. We call it getting the taste of its own medicine, and he has been coming from that and bowling very ideally to those kind of lengths, surprising the batsman with that kind of a bounce. On that occasion, the batsman was also to blame. He was stuck in his crease, not much foot movement. Halfway there, halfway he was trying to go for that kind of a drive, but in the end changed his mind, and then he had to pay the price. All in all, we are having an exciting game of cricket. Obviously, any injury here or there will cost dearly, especially the Central Punjab, who are still lurking for their first win of the tournament. But as Ali mentioned, this is not his bowling hand, so hopefully it should be fine. Actually, it's all psychological edge, I believe, that because that patch, that's in their heads. I was talking to some players also. They're scared. They were about these patches because it's such a difficult length these patches are, that if you get it right there and if you look to ball within the stumps, you're going to get such sorts of things, or you'll get out. Shahnawaz Dhani has exploited those patches well. Yesterday I thought Waqas Maqsood was brilliant. Like, he's been the pick of the bowlers in this season. If I talk about all the bowlers that I have seen, I think Waqas has been their top performer for Central Punjab, and he's the only one who's created some hope for Central Punjab in this tournament. All is good, all is well. He's back on his feet and ready to face Shahnawaz Dhani again. Yes, this time he was trying to go away from the strike. They need to be also very, talking about the Sindh bowlers, of the runs they are going to leak in that process to purchase those last 2 wickets. Not too much of protection on the onside. This was his previous over, bowling with a lot of intent and also generating bounce, some good lengths, some good variation, and also playing with the minds of batsmen to his success.
Yes, if you look at the length, that patch we've been talking about, Shahnawaz Dani has been spot on. He's bowled well. Driven straight to the man. A maiden for Shahnawaz Dani. 128 for 8 is Central Punjab at the moment. That's Central Punjab for you. 11, 56, 14, 0, 21, 0, 6, 4, 6, 8. That's not the telephone number. I'm telling you, that's a scorecard. These are the numbers that batsmen have scored. Nothing impressive, just a Clark getting 56 runs, getting out on a very poor shot last night. I think his wicket put unnecessary pressure on Central Punjab. They were looking fine, they were going good until he lost his wicket, and then Imran got another one. The young Qasim Akram in the same over. We haven't seen him yet, Tabish Khan. I thought he could have been used earlier this morning to get the wickets. With all his experience, he would get that length right also. It in the air and over the second slip for 4 runs. Some useful runs for Ahmed Safi Abdullah. He is flashing it hard. Luck was also on his side at this occasion. First 4 runs for Ahmed. Yes, as they say, if you have to drive hard, that's exactly what it did. It went out all guns off. And it flew over the slip, got in for 4. So crucial boundaries coming for Ahmed Safi. 12 he's made with a 6 on his side also. He's taken only 7 deliveries. So intentions are pretty clear that we need runs, because you just cannot keep on blocking and getting out. Another problem is not rotating the strike. Another one, shot of one, played it towards mid-wicket. This will definitely run away for 4. So Ahmed Safi Abdullah dealing in boundaries at the moment. The areas which we have been talking about, they cannot afford to leak these many runs at this crucial juncture of the game. Short ball being offered, no protection on the onside. Ahmed Safi Abdullah has been opening his arms since the beginning of the innings. 200 strike rate, his 3rd boundary already. 2 fours for him, 16 runs of 8 deliveries, and they also need to remember the simplest rule of game, that they need to score all these runs which these tail-enders are making. Once again, this one is in the air, but it will be very tough for Asad Shafiq to get it, not to be. More runs added. Ahmed Safi Abdullah is living in another world altogether. Once again targeting the onside boundary. This time it remained in the air. 2 runs added. Yeah, good intent. Good positive intent by Ahmed Safi Abdullah. Oh, look at this. He's covering the line, just wanted to play straight. Even the edges going in the gap. That's working for Ahmed Safi Abdullah. No chance for the fielder there, Tabish Khan. 10 runs of this over so far. 2 boundaries and a 2. Maybe this should be the right time to introduce Abrar from this end. If this was a usual day to bowl against the tail-enders, you will go with this kind of a bowling to bowl short outside the off-stump so that batsmen can flash the ball hard. The edge will come out and you will enjoy the success in this moment of the game. But talking about the overall things, where we are standing, 322 runs, they are still piling it on. And whatever it is going to be, a psychological barrier or the runs which they will need to score, which is fastly approaching now 350, it is going to be a huge ask for the Sindh team, who, remember, are a batsman short in this particular game. They were a bowler short when they last played in National Stadium, Karachi. So all to play for. A very interesting phase in this game. Ahmed Safi Abdullah is living in on another world. Again, the intention's clear. Driven towards mid-wicket. One taken. What these shots have done is taken all the fielders to the boundary line up. You can see point fielder deep, 3rd man deep, fine leg, square leg, all on the boundary line for Ahmed Safi Abdullah. And yes, as you just mentioned, it's probably the time for Abrar to come and bowl, because he will like to bowl on this pitch. He bowled only 1 over yesterday and changed the course of the match. Took 2 crucial wickets at the end of the day. And probably the time for him to bowl. Bilawal Iqbal, he can bat well. He's got 100 to his name in first-class cricket.
perhaps a big inside edge. Umar has been trying hard to get those 2 final wickets. 11 runs of Umar's over, 139 for 8 Central Punjab. The lead now, 323. Every run from here, Akhil, will definitely hurt Sindh, because in the morning they've done well. They've taken the important 4 wickets, but they need to stop this run flow. These are familiar faces. They were just here 5 minutes ago. What they were planning was a 100-meter run, so I think they are warming up. Tariq Saeed is looking in some lethal mood this morning, and I'm sure he's going to beat Salman hands down. So I think they are just now looking for the start-up mark and where they are going to end this. For a second, I thought he's a model, Tariq Saeed. He looks very handsome there alongside Salman, but he really is a role model for the budding commentators, I can tell you. He's a household name, and hopefully he can beat Salman. But coming back to this game, Central Punjab versus Sindh, 323 runs lead, still counting. Once again, targeted the boundary, and there she went. A big 6 by Ahmed Safi Abdullah, his second maximum of the innings. What an innings he's playing. A blinder, truly. Beautiful shot. Just looked to hit straight. Ahmed Shafi, all the shots that we have seen, he's looked to play straight, and that's a safer zone to play. Have a look at that shuffle across. Beautiful. Straight over long on for a huge 6. These are important runs for Central Punjab. The lead now increasing to 329. Things getting difficult, tougher for Sindh. He looks very young, but he has a few matches under his belt. But so far his highest score has been only of 35. So it looks like that he is in a perfect position to topple there up. Already 25 of 12 deliveries, and he's looking good. That's okay that he's trying those kinds of shots which are quite airy-fairy, but might be the requirement of the situation as well. Not sure if Mr. Zaidi is too amused out of those batting performances, but one thing is for sure that these are very useful runs for Central Punjab. What a game we are having. Ups and lows, ebb and flow. Once again in the air, but once again safe. A single-headed. Yes, I like how Ahmed Abdullah is playing. He's not trying to play cross-batted shots. He's looking to play straight, and that's his quality. That's how runs will come, with the minimum chance of getting out. That's the safest shot to play. Play straight. And it's not easy playing somebody like Shahnawaz Dhani, who's tall, who gets the bounce. The lead now becoming a big tough for Sindh. 330 runs. Bilal Iqbal is a sort of an all-round cricketer. He's got 100 to his name. He can bat well, but all he has to do is stay there with Ahmed Safi. Yep, that's his role. Just stay there. Just wait for the bad delivery and let Ahmed Safi Abdullah do the runs. He's playing with the strike rate of 200. Ahmed Safi Abdullah, 26 of 13 deliveries. One thing which they should also bring it into the equation is to take some time out of the game, because whatever time they are going to give Sindh, it will be for their comfort zone, to take their own time and chase down the total, which is going to be 350 or thereabouts. This time Bilal has some different ideas. Are they going to celebrate it? No. Shahnawaz Dhani thought for a moment that he got it, but no chance whatsoever, sir. I love this young man. I love his attitude, Shahnawaz Dhani. Every time he beats a batsman, he thinks he's got a wicket. And there's a huge smile on his face. Have a look at this again. Bat was nowhere close to the ball. And somehow he thought he's got the nick. Brilliant. I'm not sure there are no vibes behind it, but the kind of bowler and the kind of attitude he is carrying, he might be a very good prospect for Lahore Qalandars. The overall positioning and the brand of cricket they used to play. Also, not only because of his body language, but they also like to introduce the youngsters. I'm sure Aqil Javed will have a close look at Shahnawaz Dhani, because this is the type of talent they always look for.
They've done a tremendous job for Pakistan cricket, Lahore Qalandars. Yes, definitely, and I think within a couple of weeks' time or somewhere around there, the next PSL 6 draft is also coming up. So all those scouts and the managers, strategists must be having a very keen eye. That's all right that this is a different ball game altogether from red ball cricket to white ball, but the talent, if it is going to be there, the conditions are almost going to be the same. So it might be their opportunity. A better one by Shahnawaz Ridhani. Good comeback after conceding a 6, 146 for 8. That's the match summary so far. Central Punjab 276 in the first inning. A good inning by Usman Salahuddin of 80. Ali Zaria played well for 56. And Sindh, look at that, 92 all out of just 29.3 deliveries. That's not something that we associate with somebody like some team like Sindh with big names in it. Starts scoring 17, Hamza 16. And Waqas Maqsood, the pick of the four bowlers, getting 6 wickets in the first inning. I think Asad has listened to you. Ibrar is coming to bowl now. Now let's see how much it is going to pay off for this Sindh bowling. Yesterday we were talking about the signals being given from the dressing room and the analyst. There is no signal being given obviously from the commentary box, but obviously the analyst could hear the voice. The privilege is give an opinion and very quickly deviate from it. These were the things and all the possibilities. Abrar got 2 wickets in his first over, and what a start that one was for young Abrar into this innings. He's coming on the back of 48 wickets in the Grade 2 cricket. He played his first game here in National Stadium. Yes, he's promoted from second 11. That's how he got his wicket. That's what the first over that he bowled last night. That's a poor shot by Clark. Done all the hard work and picks out sort of a shot. That's the young Qasim Akram. So much is talked about him. So much is expected of him. He just could not quite convert that talent into performance. That's been the trouble for him. Like so many other promising youngsters. Yes, for sure. All that talk about that it is a different format or different ball game, especially literally we talk about the change of ball from Aslin to this Kokabura, but now I think he's learning the trick of the trade, because if you're going to the misty spin, it is very difficult to read the spin or read it off the wrist. There are 3 or 4 kind of variations within an over. You can try that. I think he was trying too much. Now he can take it easy. He's got success on his back, and all he can do is to count on it and make full use of the conditions. The ball is already very old now, approaching 45 overs mark, where the fast bowlers could not expect a reverse swing or anything like that, at least until next 10-15 overs or so. Not too much of an attacking field, especially now when Bilawal Iqbal is out there. He's also trying to open his arms. And the partnership now, 30 of 31 deliveries. What a crucial partnership this has been. That's the appeal, inside edge probably. Down the track, straight over mid-on. We'll have to wait for the signal. Yup, raises his arms for a huge 6. Bilawal Iqbal finishing this over with a huge 6. So the partnership now building up. Moving to 36 runs. Bilal finding the boundary first time in this innings. His first 6, Bilawal Iqbal. What a solid hit that one was. Useful runs for Central Punjab. Their lead now is of 337 and 150 for Central Punjab. What a contrast to their first innings. Central Punjab were looking more stable, technically more correct on the day 1 of this round 6 here in National Stadium. But now they are 8 down, but now look at the scoring rate in the last 5 overs, which we usually talk in an ODI or a T20 game. But talking about this 4-day game, they have scored 36 runs
and no loss of wicket in that period of time. There might be a change in bowling from the other end. Shahnawaz Dhani is doing all right. Yes, he is going to continue. Yeah, also, if you look at the overall run rate of this inning, it's 3.4. They've done well. Shorter one played just between the two fielders. There are fielders on the boundary line. A mid-wicket fielder also, deep square leg also, deep fine leg. So the intentions are clear that they're going to give the singles to Ahmed Shafi Abdullah and look to attack at Bilawal Iqbal. Not to forget, Bilawal Iqbal also has 100 to his name. Yes, on the top of three you can find Southern Punjab and Northern, and in Karachi you can find them at the UBL Sports Complex, where Southern got out on 285. Northern got a substantial lead. They got out on 381, and at the first drinks break this Friday morning they were 49 for 2 Southern, trailing still by 47. So putting things into perspective, to go right at the top of the table, Southern Punjab need to wipe off the lead of 47 against Northern, and then they need to give them a target, or they can look for the option of draw. Then we talk about Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, who you can find at the State Bank of Pakistan Sports Complex. There, Khyber Pakhtunkhwa were 320 all out. Balochistan were out rather cheaply on 120. Khyber Pakhtunkhwa now 156 for 4, and they are having a massive lead of 298. Quick single added to Bilawal Iqbal. You know, our South African head of production is finding it very difficult to pronounce or spell Khyber Pakhtunkhwa at times, but I can ask her to pronounce or call Lumembur Sorsobe. So, you know, first time he came to the egg, I was in the radio comm box, and it was very difficult. I had asked Ramiz Raja and a couple of South African guys, and I think I'm still not pronouncing him correctly. I will ask her, Lumembur Sorsobe, is it okay or not? I'm not even trying. Yeah, you can always tell him it's easier to pronounce KPK. Why do we call all Khyber Pakhtunkhwa? KPK will work too. Short one up in the air. This might land between the two fielders. Yes, it does. Although wicketkeeper ran all the way back to fine leg, but they've run well too. Come back for 2 runs. Fortune favors the brave, and this has been exemplary for Ahmed Shafi Abdullah. Everything going for him. Once again, a short ball being offered. No width was there, but he's trying to go for every delivery. I'm not sure if this is the signal being given from their pavilion, or this is the strategy which is being awarded to him, or he's got the lessons, but he's making full use of the deliveries which are offered to him. But in all this process, they are making some very crucial runs. The lead is now fastly approaching 350 runs mark. Shot bouncer. Good reply by Shahnawaz Dhani. Good aggression shown. See, that's how he plays. This is not the first time that I'm seeing him bat. He's usually an aggressive batter, and he's up against aggressive bowler, Shahnawaz Dhani. He's not afraid to bowl bouncers. He's got protection on the leg side, fine leg, square leg, all on the boundary lineup, and a mid-wicket fielder also for a miss hit, and a deep point fielder also. So they've all worked him out well. But he's finding the gap somehow. If it's a miss hit, it's going in right between the two fielders. So everything working for Shafi. More runs for Ahmed, and he will retain the strike as well. They lead him by 342, 158 for 8 Central Punjab. The brawl will continue. The partnership now 41, the highest of this inning. And the total lead is now 342 runs. Troubles for Sindh, definitely.
Not only the scoring has been unusual, but it has been a very unusual morning in Karachi. It was very misty. I know you don't get up that early in the morning. On a match day, I do. We have to leave hotel at 8:30. But I'm talking about 5 or 6 in the morning. If you had a chance to wake up that early, it was very foggy, especially in the open parts of Karachi, and courtesy that there's a very pleasant slight breeze had picked up, and yeah, not as cold as it was in the previous game, but you can feel some pleasant air when you can go out, so not too bad for the players. Is there an open area in Karachi? Yet to Karachi see. is too wide. I think you need to spend more time in Karachi apart from the hotel and the stadium. Karachi is all spread, acres and acres of land, and it is still spreading. Yeah, we're just limited to that one road and the hotel. We're not allowed to go out because of the COVID situation, naturally, and rightly so. Wanted to sweep hard this time, Bilal Iqbal. The intentions are pretty clear now. You need to get runs, maximum of them, and they've done well, especially this partnership. It's now 42 or 41 deliveries. Runs have come through good rate. Yes, for sure, they're doing one thing right, that they had upset the apple cart, but on the other end, if they are going to get out within, let's say, the next 10-15 minutes or so, then there will be a lot of time left. So what they need to do is to get some time out of the innings for Sindh. Which would be a huge factor. So let's see all of the things and you know, the trips and the tricks and the strategies coming into the equation. Oh! Runs again. Probably 2 of them. Yes, easily come back. Bilal Iqbal. Leg by signal by umpire. The lead now 345 at the end of the over. It's 161 for 8. छोड़ना नहीं है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप 44 गेंदों में 44 रन की अहमद सफ़ी और बिलावल इकबाल के दरमियान। शाहनवाज धानी बहुत लंबा स्पेल कर रहे हैं आज फार एंड से। इस बार उठा दिया स्क्वायर लेग की जानिब, वहाँ पर फील्डर थे लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक और छक्का सफ़ी अब्दुल्ला का। 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई। तीसरा छक्का लगाया इस सुबह का सफ़ी अब्दुल्ला ने। अच्छा टाइम किया इस बार। कैरियर का हाईएस्ट स्कोर भी बना लिया है अहमद सफ़ी ने, और ये बहुत बड़ा छक्का मिड विकेट की तरफ खेला है। थोड़ा मिड लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल था, उसको अच्छा कनेक्ट किया अहमद सफ़ी ने। बहुत तेज़ी के साथ रन्स बनाती टीम सेंट्रल पंजाब की, और 50 रन की पार्टनरशिप भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। चार छक्के इस इनिंग में अब तक लग चुके हैं। बाउंसर किया। फ्रस्ट्रेशन होती है जब फास्ट बॉलर को इस तरह का हिट लगे। तो 9वां ओवर अपने स्पेल का ये करते हुए शाहनवाज दानी, और ये अच्छी जो बॉलिंग की है आज शाहनवाज दानी, ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। इसलिए उन्होंने, लेकिन आई थिंक ये आउट होने का मंजर साद नसीम का बाउंसर। ये 9वीं विकेट की पार्टनरशिप तारीख जो है वो मुश्किल करती जा रही है। 350 रन की लीड ऑलरेडी हो चुकी है।
फिर हिट आउट करने के लिए गए, इस बार वार खाली गया सफ़ी अब्दुल्ला का। तेज गेंद थी, शायद इस ओवर के बाद शाहनवाज हानी को हटाने के मुतालिक सोचेंगे, क्योंकि ये सुबह से बॉलिंग कर रहे हैं। 9वां ओवर है इनका, तकरीबन 1.5 घंटे से खेल में मौजूद हैं। तो कप्तान को, और ख़ास तौर पर जब ये 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई है, बैट्समैन भी आदी हो गए हैं इनकी बॉलिंग को खेलने के, तो आप बदल सकते हैं बॉलर। सफ़ी अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, अच्छी बॉलिंग भी की है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने उनके टॉप विकेट टेकर्स में से एक हैं। पहली इनिंग्स में इनकी बॉलिंग की ज़रूरत महसूस नहीं की थी सेंट्रल पंजाब ने, लेकिन जाहिर है कि सिंध को चौथी इनिंग्स खेलना है इस मैच की, तो सफ़ी अब्दुल्ला का किरदार अहम होगा। इनके अलावा कासिम अकरम ऑफ स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। बैटिंग में जो इन्होंने किरदार निभाया है, वो 56 रन के इजाफे में 7 विकेटें गिरी थी सेंट्रल पंजाब की, और लगता था कि सिंध की टीम खेल में पूरी तरह वापस आ गई है, लेकिन ये पार्टनरशिप जो है ये सिंध की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। इसे ख़त्म करने की जल्द अज जल्द ज़रूरत। खासा लंबा सेशन है, और अगर ये दोनों बैट्समैन चंद ओवर और विकेट पर रहते हैं तो फिर सिंध के लिए और ज़्यादा लंबा हो सकता है। 3 घंटे का दौरानिया है इस सेशन का। और उठाकर खेला, स्क्वायर लेग पर सऊद हैं, लेकिन वो गेंद को देखते रह जाएंगे। और एक और छक्का, चौकों छक्कों की बारिश हो रही है। सफ़ी अब्दुल्ला अब अपनी निस्फ सेंचुरी से, अव्वलीन निस्फ सेंचुरी से एक स्ट्रोक के फासले पर। दफ़ा फिर पीछे गिरा हुआ था बॉल, उसको बहुत ही अच्छा मिडिल किया है अहमद सफ़ी ने, और स्क्वायर लेग के ऊपर फ्रंट छक्का लगाने में कामयाब हुए। तो यहाँ इस ओवर के अंदर 2 छक्के लगाए हैं अहमद सफ़ी ने, और बहुत तेज़ी के साथ रन्स बने हैं। जो 9वीं विकेट की पार्टनरशिप है अहमद सफ़ी और बाल के दरमियान बढ़ती हुई, और इस वक्त 56 रन की पार्टनरशिप हो गई सिर्फ 50 बॉलों में, और ये बड़े कारामद रन होंगे सेंट्रल पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिंध को थोड़ा सा अब मुश्किल आना शुरू, क्योंकि 350 रन चौथी इनिंग में चेस करना आसान काम नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, बहुत कुछ हो भी सकता है इसके अंदर। और जिस तरह का पिच का बिहेवियर होता जा रहा है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सिंध के पास भी बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं। शर्जील हैं, वहीद यूसुफ जो 2 सेंचुरियाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, असद शफीक हैं उनके पास। पार्टनरशिप बहुत ज़रूरत होगी इतना बड़ा स्कोर करने के लिए। तारिक अबरार 2 खिलाड़ियों का आउट किया है, पवेलियन एंड से तैयार हैं बॉलिंग करने के लिए। हुआ था, जोरदार हिट लगाना चाहते थे, कवर्स की तरफ खेलना चाहते थे, बैट के अंदरूनी तरफ लगा, 1 रन यहाँ बन सकेगा। 2 खिलाड़ियों को आउट किया था अबरार अहमद ने, जो अब राउंड द विकेट आएंगे इस वक्त लेफ्ट हैंडर को। तो ऑफ साइड के जो फील्डर हैं उनको करीब बुला लिया गया। पॉइंट कवर मिड ऑफ, ऑन साइड में मिड ऑन पर शर्जील को पीछे रखा गया है, तकरीबन बाउंड्री से 15 गज आगे। किस तरफ उनको हेड लगाएंगे, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से। जी हाँ, बॉलर के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। ये फ्लैट शॉट, और गेंद टिपक आती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। इस दफा आगे पिच हुआ बॉल था, और जिस तरह बैट के ऊपर आ रहा है अहमद सफ़ी के, एक और बाउंड्री हासिल की। अब मैं थोड़ा सा असद शफीक की मेरी बात शायद मैं कासिर हूँ कि हाफ पे रखा हुआ है फील्डर, अगर पीछे ही कर दें शर्जील को तो यहाँ पर बाउंड्री बच सकती है, लेकिन
आधी उस पर खड़े हुए थे, उनके ऊपर से चला गया तो फिर भी 4 रन हो गए। सो बाउंड्री से अगर आए तो यहाँ पर, क्योंकि अहमद सफ़ी जो है वो ज़रूर चांस ज़रूर ले रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अब तारिक एक्स्ट्रा कवर की तरफ देख रहे हैं। ज़्यादातर उन्होंने स्ट्रेट हिट्स लगाई हैं। इस बार ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, इनसाइड पर 1 ही रन बन सका। गेंद ज़्यादा टर्न भी नहीं हो रही अभी तक इस पिच से। हमने यही देखा 2 विकेटें कल जो अब्रार ने हासिल की थी, बैट्समैन अपनी गलती के ज़रिए गए थे। ये वो मौका था जब सिंध की टीम जो है खेल में वापस आई थी, इनके एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल करने से। और इस बार गेंद बोल्ड करती हुई निकल गई और ये स्किड करती हुई चली गई। बिलावल इकबाल इसे खेलने में नाकाम रहे। अब्रार ने विकेट हासिल की। ये देखिए तेज़ गेंद थी और लेग साइड की तरफ खेल गए, गेंद तकरीबन सीधी निकल गई, ऑफ स्टंप को ले उड़ी। तो बिलावल 14 रन बना सके। ये ख़तरनाक पार्टनरशिप का खात्मा हुआ 62 रन की 179 पे 9। वकास मकसूद आखिरी बैट्समैन सेंट्रल पंजाब के। आज सुबह से 83 रन बनाए हैं सेंट्रल पंजाब ने। उनकी 4 विकेटें गिरी हैं इस सेशन में। ये बैटिंग हीरो साबित हुए हैं सफ़ी अब्दुल्ला। कल हमने देखा था अखलाक जिनमें जारहाना अंदाज अपनाया वो कामयाब रहे। आज सफ़ी अब्दुल्ला ने भी वही काम किया, बार बार जो वार किए उसी का फ़ायदा हुआ। अब तक 4 छक्के लगाए हैं, 3 चौके, 33 गेंदों में 49 रन बनाए हैं सफ़ी अब्दुल्ला ने। और इसके साथ ही उनकी पहली निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। 4 रन भी मिल जाएंगे इस आउटसाइड एज पर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये पहला मौका है जब सफ़ी अब्दुल्ला ने निस्फ सेंचुरी का संग मील अबूर किया। बड़ी उम्दा और जारहाना बैटिंग का मुजाहरा। टाइमली 50 किए हैं अहमद सफ़ी ने। ज़रूरत थी उनकी टीम को, 8 आउट हो चुके थे और उसके बाद जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, एक अच्छी जिसे कहना चाहिए टारगेट जो है वो सिंध की टीम को अब मिलेगा। ऑलरेडी 367 रन का टारगेट हो ही चुका है और आखिरी विकेट है। बहुत आसानी के साथ उसको खेल दिया मिड विकेट की तरफ। नए आने वाले बैट्समैन वकास मकसूद अब थोड़ी फील्ड में तब्दीली करने जा रहे हैं। असद शफीक स्लिप ले ली है उन्होंने, मिड विकेट के फील्डर को बुलाया है गली की तरफ। दोनों ही ये फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बैट्समैन हैं, सफ़ी अब्दुल्ला और वकास। अच्छे क्रिकेटर इन दिनों सामने आ रहे हैं फैसलाबाद से भी। इन दिनों अच्छे कोचेस भी देख रहे हैं। मोहम्मद सलमान जो विकेट कीपर थे पाकिस्तान के। ये देखिए नए ओवर की इब्तिदा इस ज़ोरदार शॉट के ज़रिए की। इस बार सफ़ी अब्दुल्ला नहीं बल्कि वकास से
वो बाएं हाथ से हिट करने में और बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए। ओवर पिच बॉल मिल गया वकास मकसूद को और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। डाउन के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए तो पहली बॉल पे 4 रन बना के अपना खाता खोला है वकास मकसूद ने। हमारे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वकास से कि इस तरह की हिट खेलेंगे, लेकिन पोजीशन ऐसी है कि हर चीज़ जो है वो हो सकती है। मैं बात कर रहा था कि फैसलाबाद में इन दिनों अच्छे कोचेस जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। एजाज अहमद जूनियर थे जो सेंट्रल पंजाब की टीम के साथ पिछले सीज़न में जब उन्होंने टाइटल जीता था। उनके अलावा मोहम्मद सलमान हैं, पहले यहीं कराची से उनका ताल्लुक़ था, फिर फैसलाबाद शिफ्ट हो गए, वहाँ काफ़ी काम कर रहे हैं इस सिलसिले में क्रिकेटर्स के साथ। माजी के विकेट कीपर फैसलाबाद, उनके अलावा सियालकोट। ये देखिए सभी अब्दुल्ला बैटिंग जुआ था। ये पुल उन्होंने बड़े अच्छे खेले पीछे की बॉल को, और ये देखें क्लियर किया अपनी फ्रंट लेग को। ये मिडल ऑफ द बैट, ये पीछे गिरा बॉल था, उसको जो पीछे मिला उनको बॉल उस पर उन्होंने भरपूर शॉट्स खेले, रन्स हासिल किए। मोहम्मद उमर का ओवर का अख्तिताम 188 for 9। एक 188 एक विकेट बाकी है सेंट्रल पंजाब की, लेकिन बर्तरी अब 372 की हो चुकी है। 377 पिछले 5 बरस में किसी भी टीम का वो नेशनल स्टेडियम कराची में या कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में, यूँ कहना चाहिए कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में पिछले 5 बरस में सबसे बड़ा जो रन चेज़ है चौथी इनिंग्स का वो 377 है। इसलिए रिकॉर्ड साज कारकर्दगी जो है वो दिखाना होगी। सिर्फ 5 रन का फ़र्क है जहाँ तक उस हदफ का ताल्लुक है। आज ऐसा शफीक की जो कप्तानी है उस पर भी ज़ाहिर बात हो सकती है। एक तो बहुत लंबा स्पेल करा दिया है इन्होंने शाहनवाज धानी से फार एंड से, और आबिश खान ने अभी तक कोई ओवर नहीं किया, जबकि इतनी तेज़ रफ्तार पार्टनरशिप थी तो अपने स्ट्राइक बॉलर को लेकर नहीं आए, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग की गई टेल एंडर्स पर। थोड़ा सा डिफरेंट करते तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि 8 आउट हो चुके थे और इस दफ़ा आउट एज हुआ है। थर्ड मैन की तरफ जाता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ फील्डर गए, लेकिन से यहाँ पर 2 रन बन सकेंगे। प्लानिंग जो होती है वो उन्होंने उनको पीछे की बॉल के ऊपर रखा, स्क्वायर लेग पीछे रख के वहाँ पर उनकी कनेक्ट्स होती चली गई। आई थिंक जो नीचे के बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर बाउंसर से ज़्यादा फिर इस दफ़ा रिवर्स स्वीप खेला है खास मकसूद ने, और मुझे लगता है कि 4 रन यहाँ हो जाएंगे, और इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बड़ा अच्छा खेला, 4 रन हासिल हुए वकास मकसूद के, और वो भी
आते ही उनका साथ देते हुए तेजी के साथ यहाँ पर ये रन्स बन रहे हैं। इस ओवर में 6 रन बन चुके हैं ऑलरेडी। निकल के एक बड़ी हिट लगाना चाहते थे, बैट के नीचे लगा। 1 रन बना। इस तरह अबरार का ओवर अख्ताम 196 फॉर 9। ये इस मैच का अहवाल है। सेंट्रल पंजाब की टीम ने पहली इनिंग्स में 276 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 196 पर 9 खिलाड़ी आउट हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ रन गेम थी, इसे सही तरह फेंड नहीं कर सके खास मकसूद। अभी भी ये शॉर्ट पिच बॉलिंग की हिकमत अमली है फास्ट बॉलर की, वो जारी है। देखिए नजरें हटा ली थी खास मकसूद ने। आर्म गार्ड पहना हुआ है। 92 रन बनाए सिंध ने अपनी पहली इनिंग्स में। और जहां तक केपी और बलूचिस्तान के मैच का ताल्लुक है, स्टेट बैंक और पाकिस्तान स्टेडियम में ये मैच जारी है। केपी ने पहली इनिंग्स में 322 रन बनाए। बलूचिस्तान की टीम 120 पर ऑल आउट हुई अपनी पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में केपी का स्कोर 98 है, 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। दरअसल 156 है और 4 खिलाड़ी आउट हैं। इस तरह केपी की जो बर्तरी है आज तीसरे दिन वो 356 की हो चुकी है। इसरारुल्लाह बैटिंग कर रहे हैं 85 रन पर। पहली इनिंग्स में कामरान गुलाम ने सेंचुरी बनाई थी, बड़ी इनिंग्स उन्होंने खेली थी। और सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न के मैच में यूबीएल पे सदर्न पंजाब ने पहली इनिंग्स में 285 रन बनाए। नॉर्दर्न की टीम ऑल आउट हुई 381 पर। दूसरी इनिंग्स में सदर्न ने 2 विकेट पर 49 रन बनाए हैं। सदर्न को 47 की बर्तरी है, 8 विकेटें उनकी बाकी हैं। दिलचस्प मुकाबला है वो भी। लेकिन ये मैच जो है ये बहुत तेज़ी से आगे चला गया है नेशनल स्टेडियम कराची में। हालांकि दूसरे सेंटर से ये मुकाबला निस्बतन पीछे रहता है। राउंड द विकेट मोहम्मद उमर, 2 स्लिप्स और एक डीप स्क्वेयर के साथ। स्लो बाउंसर किया उमर ने। और अभी भी स्ट्रेटजी वही है कि पीछे बॉलिंग कर रहे हैं। देखें फिंगर को रोल करते हुए पीछे किया था बॉल। ये अच्छी कलेक्शन शाहजर मोहम्मद की। ये अजीजुल्लाह हैं, ये अच्छे फास्ट बॉलर हैं। अभी तक मौका नहीं उनको मिल सका, झुक गए। खास कुछ ज़्यादा बाउंसर्स का इस्तेमाल नहीं करते बैट्समैन पे। अच्छे विकेटें ली थी, अच्छा मौसम और अच्छा मैच है इनके लिए। बॉडी की तरफ किया था बाउंसर, लेकिन अच्छा छोड़ा वकास ने। यहाँ बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड में भी खेले हैं लीग क्रिकेट, फैसलाबाद से खेलते रहे हैं। वकास मकसूद और कराची किंग्स के लिए अभी इन्होंने टाइटल जीता पाकिस्तान सुपर लीग का। महमूद अहमद, अभी भी वही शर्त है इंग्लैंड जाने के लिए 5 मैचेस की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो हुआ करती थी। जी वो तो है। उनकी वर्क परमिट जो इशू होता है वो उसी बेस के ऊपर होता है। 18 मंथ्स के अंदर आपके 5 मैच होने चाहिए।
इस दफ़ा पुल किया, नीचे रह गया तो थोड़ा सा बॉल लॉन्ग लेग की तरफ आया, 1 रन बनाने में कामयाब हो गए। और अब तो कुछ लीग्स के अंदर कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं कि आपको लेवल 1 कोच होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सोच है यहाँ सिंध की टीम की, सुबह के वक्त जब उनको विकेटें मिल रही थी मुसलसल, तो उस वक्त गेंद को मूव कराने में कामयाब हुए। इनके बॉलर गेंद को आगे गिरा रहे थे, फिर अचानक इन्होंने गेंद को पटकना शुरू कर दिया। उसके बाद विकेट भी नहीं मिली, रन्स भी ज़्यादा बनते चले गए। ये देखिए एक और शॉर्ट गेंद थी, इसे फ्लैट बैट से खेला। अभी भी सोच में कोई तब्दीली नहीं है। ऐसे शफीकी 198 पे 9। बावन ओवर, ये पुरानी गेंद है अबरार अहमद के हाथ में। जूं जूं गेंद जो है इसकी उम्र बड़ी है, तो बाउंसर जो हैं इस वजह से भी शायद ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। गेंद जब सॉफ्ट हो जाती है तो यहाँ बैटिंग करना आसान हो जाता है नेशनल स्टेडियम की पिच पर। इस वक्त फील्ड बिल्कुल फैली हुई है। लॉन्ग ऑन पर शर्जील हैं, डीप मिड विकेट पर इस वक्त साद अली हैं, डीप स्क्वायर लेग पोजीशन पर मीर हमजा को देखा जा सकता है। ऑफ साइड में भी 2 फील्डर हैं, लॉन्ग ऑफ पर, डीप पॉइंट पर बैट्समैन से दूर। बाउंड्रीज को रोकने की कोशिश कप्तान असद शफीक की, और अब अहमद सफ़ी जो हैं वो कोशिश हो गए। सारे फील्डर बाउंड्री लाइन की तरफ, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन साइड की फिर हल्के से खेल के सिंगल लिया, और गेंद डायरेक्ट हिट करती स्टंप्स को, और यहाँ पर उमर से मिस फील्डिंग हुई। इसके नतीजे में दूसरा रन बनाने में कामयाब हुए उमर। बहुत तेज़ी के साथ उमर यूसुफ आए थे और उन्होंने थ्रो किया, और डायरेक्ट हिट पे चांस ज़रूर बनता है, उमर से भी मिस फील्डिंग हुई। और ये गुगली थी, इस मरता रीड नहीं कर सके सफ़ी अब्दुल्ला। आउट होने से बाल बाल बचे, तो 200 रन्स मुकम्मल हुए, और 53 ओवर्स भी सफ़ी अब्दुल्ला 58 पर हैं। 12 रन्स बनाए वकास ने, और इसके साथ ही पानी का वक्फा एनएसके पे।
Good afternoon once again. National Stadium, Karachi, hosting this round 6, where Central Punjab are now exactly 200. And what an innings by Ahmed Safi Abdullah. Now he is the top scorer of the innings, and a rollicking partnership between Bilawal Iqbal and Ahmed, where Ahmed was clearly the predominant scorer. 3 wickets for Shahnawaz Dhani and also for Abrar, but in that process they had leaken away a lot of runs. They are still having a substantial lead of 384, so that will be one of its kind performance if they are to chase down this massive total. But remember, still some time to go in this 4-day game. This is 1 hour before the lunch break, which will be of 1 hour, and then one full session of 3 hours this Friday afternoon. Once again, Waqas now joining the party. Umar is in the attack, and Sikandar has joined me in the comm box. It's unbelievable how things change every half an hour. Who would have thought that the last wicket will stick around and form a partnership? Safi getting 58 of 45, just again tilting the game in Central Punjab's favour. Sindh will only be there to blame themselves. One just feels that bowling only fast bowlers for the first 1.5 hour or 1 hour 40 minutes was just pushing it a little bit. Shahnawaz Dhani bowling 9 overs on the trot. No Abrar. Could have been introduced a little earlier, and the minute he comes in, he gets a wicket in the second over. He's in, look at that, 6 overs, 3 for 25. So I don't know where the rocket science was. He's turning the ball both ways. The ball is, at that time, it was around 31, 35 overs old. Yes, you talk about moisture, you can extract things out of it, but when somebody is not really depending on the conditions, can really spin the ball both ways, you could have introduced him, and the result came in straight away. Now 200 for 9. If they get a lead, which is not far away, around 400, time is on their side, Sindh side, yes. But so it is on Central Punjab's bowler side. Tabish Khan today hasn't bowled a single delivery on day 3. So it's just a little mind-boggling. A few things. There's just been leaking runs as well. Suddenly the run rate has gone to 3.73, which is only hurting Sindh's cause. He's bowled a marathon spell. There was a big LBW shout for Safi when he was at 0. He hadn't started his score. In the air, won't carry. Mir Hamza might not be able to beat it as well. It's gone for 4. So just throwing their bat at everything. Waqas taking a leaf from Ahmed's book, flashing it hard, thick, solid edge.
4 more runs added, his 3rd boundary already. A long tall chase for Mir Hamza, who's marching on the backward point boundary. No chance whatsoever. So now the lead is already approaching 400 mark. A huge psychological barrier it is going to be. Now there's a short third man. He's actually moving back. Sharjeel is the 75 marker just to plug that gap. Four runs of the first over after drinks break, and to the 5th added now. All happening here in National Stadium. Throw was unnecessary, not called for at this point in time. End of the over. 205 for 9. Wicketkeeper collected it, and then Shazar wanted to hit the stumps. No chance whatsoever. And there she went, and credit should be given to Ahmed Savi Abdullah. He was alert, and there he went. Another run at it. I don't know where Shazar was throwing that ball. As an underarm throw. I don't think he was trying to run him out because he was miles away from the stumps. And the bowler and the follow through as well was just looking at the ball passing by him. I think Sindh has just been caught napping. Out of nowhere. So many runs have been added. There you go, this one spins away. 105 added today. 109 rather. Come on. Bit of chance, didn't carry to Asad Shafiq there in the first slip. And once again hit on the gloves. No, yes, a bit of a shake to Waqas. Just removing the gloves. Didn't carry to Asad Shafiq. This partnership also has been now worth 26 runs. Waqas has been scoring runs predominantly. Safi is slightly cautious during this final partnership. Catch! Gumegi! More runs to Waqas. It is going to be boundary. Once again, Hamza could not chase that one. Wild swing of the bat. Boundary. Unbelievable. How did the fielder did not improvise that? It's going to spin away from him. And so it did. You always end up just chasing the ball because it's spinning away. He swept that with the spin. Mir Hamza is there to find the ball. Now he gets it. What a session we are having. Remember, this being Friday, there are going to be 2 elongated sessions, 3 hours each, and then 1 hour lunch and prayers break in between it. Central Punjab is sitting pretty, at least in this particular game. They are holding it from the scruff of its neck. The lead is now approaching 400 runs mark. Well sweep, and once again in the air, but fell short of Shahnawaz Ali Dhani, single-headed. Well done, Safi is batting on 58. This was a shout. Catch! In the air, but once again he could not grab it. He truly has played a blinder since then. One would say that he was fortunate to survive out there. Once again he is going to be retaining the strike. Played in the air, wide of Abrar.
bit of an opportunity. 6 runs added to the total in this over to 1-1 for 9. What a difference this tail is creating in this game. 94 runs added since the fall of 8 wicket. When Saad Naseem got out, it was looking curtains for Central Punjab, not to be. Good to see this top first-class score by Safi Abdullah. And finally, the experience of Tabish Khan is coming into the act, into the 3rd hour of the day. His bowling figures, 6 overs, 28 runs, and it all happened last night. Since then, he has not been asked to bowl. Shahnawaz Ali Dhani, he's young. Also, Umar, they were bowling too short. Perhaps they were quite excited to bowl to the tail-enders and to purchase a wicket, hoping for an edge, but that was hoping against the hope. And now let's see that was the experience that Tabish Khan is going to do, because remember, not only that he can be very lethal with a new delivery, new ball, but also he's a very useful bowler with the old ball. Also, he knows the art of doing the reverse swing. But they need to get this final wicket as quickly as possible. Things are going out of their hands. The lead is now approaching the psychological huge barrier of 400, 395 runs lead already. One fielder at the square leg position on the boundary line. Still one slip. 2 more men on the boundary lines. 1 at point, 1 at third man. Safi really has played a blinder. If you missed it, 4 boundaries in terms of 4s and 4 big 6s. Yes, he was playing many shots in the air, but most of the boundaries which he's got were pure cricketing shots, proper pull towards the mid-wicket and to the long on long off region. Played in the V as well. He got 3 wickets in the first innings. Brilliant start with the new ball, which was the second new ball in the day 1. Peach of a delivery, sharp outswing, surprised Saad Naseem, and this is how the day 2 started. Now it looks a long while ago, the way things have transpired since then. Whole Sindh team got out very cheaply, adding away only runs in the 19s, which was the lowest total for any team this Azam trophy. And then look at Central Punjab, they are now 2-2 for 9, but almost 100 runs added by this tail, courtesy the brilliance by Safi Abdullah. He's still out there. Akhlaq started things with a lot of comfort and control. 56 runs for him. Slightly present as compared to yesterday. The breeze has picked up since this morning. It might not be that tough for these fielders as compared to what it was last afternoon. They were sweating out, especially during this part of the day. It was too tough going. They like to bowl in long spells, especially the youngsters. We were having a misty morning, quite foggy in the outskirts of the city. Another change in weather, and this has been the trend with the onset of winter here in Karachi, where you will see a lot more such days where the temperatures will go down to mid-teens, but the dryness would be the major factor which
can make winter really being felt by the Karachiites. Lovely afternoon so far. And now he has taken apart Tabish. First boundary of Tabish off the back foot. 4 more runs added to the total. 217 for 9. If the last batsman can play a shot like that to your spearhead frontline bowler, well, I think then Sindh will be more than happy. If the last wicket can bat like that, and there's nothing available for the bowlers, they may as well make 500. Because then you can't bowl them out. We haven't seen any side bowling the opposition out, taking 10 wickets here. Look at that partnership. Safi and Iqbal, 62, and then 38 for this one. The lead now is 401. I don't think that Central Punjab at any point would think that 400 is enough. They'll just keep batting because it's the last wicket. It's bonus. And Sindh somehow gives a feeling that they're more than happy just bowling like that. Let's kill some time. Lesser time to face deliveries. Basit Ali. Yeah, the head coach was of the opinion that he can chase around 350. Now look at that shot. Waqas Maqsood, the last batsman, plays a reverse sweep and he knocks him over. The wicket keeper has been jolted by a truck running into him. Man wearing pads, gloves, helmet. Yeah, there you go. Boom. Yes, more like two rugby players banging into each other with a lot of aggression. But we'll take this opportunity to update you what's happening at the State Bank of Pakistan Sports Complex, where things are shaping up even in a quicker fashion. Khyber Pakhtunkhwa got all out on 199 in their second innings. And courtesy that, Balochistan need exactly 400 runs to win. They are in the neighborhood in the points table, so definitely both teams are desperate for a win. So it is going to be very interesting in the State Bank of Pakistan Sports Complex. Even Waqas Maqsood is not looking that comfortable. Even he was the one who was moving with all the inertia and energy. Banged into Shazar. Shazar on the other part is looking fine. And a good opportunity to have a drinks break. So let's see what happens in the State Bank of Pakistan Sports Complex. Almost in a similar fashion there, Khyber Pakhtunkhwa scored 320 in the first innings. Balochistan were all out, 120. Don't understand. The physio came out. They're chatting with each other. Gets some water going. The physio doesn't even touch the guy. And now he's just walking back. This is what happened. It's probably the visor of the helmet that hit him in the chest. And then that's enough. I thought Shazar would call for a physio. Waqas has called for one. All is well that ends well. Once again a sweep shot, and once again it will bring another boundary for Waqas. Hey, this is what I was talking about. We had that bit of an accident there between the keeper and Waqas, so we forgot about it. It was a reverse sweep, and this time around the regular sweep, he earns more runs. So we're playing at will. Not only Sindh is unable to wrap Central Punjab's innings, they're also just giving runs away. Waqas gets 28 of 27. Oh, ये था बेहतर था. Once again by Abrar, and once again going in vain. Reverse sweep attempted, moving away from the off stump. Desperate for a win, both the teams, but they are desperate for a wicket.
the second best partnership of the innings. Once again, coming out of this trail. Predominantly runs being scored by Waqas. 6 runs of Brars over. 2, 2, 3 for 9, leading by massive 407 runs. We look at the match summary and compare the two fielding sides. Sindh has been fielding and been out there in the sun for almost 160 overs compared to Central Punjab's 29.3. That's the difference. There are tired legs out there. The bowlers are tired. 160 plus overs compared to 29.3. That's a major difference. And that's courtesy some really ordinary batting which bowled them out for 92. Right now, all they want is just to get this last wicket and get to the changing rooms, get a nice shower and then sit back and let the batsmen do the rest. Marathon spells from Shahnawaz Dhani. Even at the end of the day, Tavish bowled quite a few. In the first innings, there's a very long spell from Abrar Ahmed. I don't know why Tabish is not trying to come round the wicket to the left-hander. He's a last batsman. Try to bowl full into the stumps. Something different, because this particular ploy isn't working. 65 for Safi, 29 for Waqas. His partnership now 46. Lead is now 409. Really, this length, this bowling is not helping. You got two men, deep square leg, wide, deep fine leg. And you're bowling a length ball. They really need to regroup, Sindh. You need to understand that this game might just be slipping away. And if they're thinking that let them bat on and take time and eat time and we'll play for a draw, that could be a good strategy, but it's quite negative. Got to bowl them out. There's still a lot of time left in this 4-day game. In the beginning of this innings, if you were asking this team of Punjab that what is going to be the ideal lead against Sindh, I think 400 would be the maximum which they would have thought. Even after collapse of their top order, Akhlaq scored runs, and then all the men in the middle order or the late middle order position just collapsed. Despite that, they had been coming back courtesy the partnership between Ahmed Safi and Pilawal. Now between Ahmed Safi and Waqas, which has already scored 50 runs mark, 51 of 53 deliveries. Attempting a short one, but it's not well directed. It will never bring the deep square leg and wide deep fine leg into play. They've tried these short balls in this bowling attack. It hasn't really worked for them. The short ball strategy with that placement of the field has got to be well directed as well. Force them to play. This one better and well played by Waqas, keeping it down.
Into the over. 2:31 for 9.